Okay, today what we'll do is we'll do another two problems on reciprocating compressors. See what is the given question. A double acting air compressor of 18 centimeter diameter means what D is given, and 120 centimeter stroke runs at 120 rpm and operates between 1 bar and 10 bar means what P1 and P2 is given. The lower temperature being 15 degrees Celsius. Estimate the power phi. What the asked us to find? Estimate the power final temperature T2. Temperature rise if the compression index is 1.3. Okay. What is given now? A double acting diameter is given. Diameter is 18 centimeter. How much it will be? 0.18 meters. Stroke, that is L, is 120 centimeter. That will be 1.2 meters. N is 120 rpm. P1, P2, T1 and N is given. What is the first step? The first is to draw. The first step is to draw the PV diagram. Okay, PV diagram is already drawn. Now what is given? Now see here. Whenever in the question, if they have given you the value of D and L, it means that you have to calculate the step volume. What is the formula for step volume or displacement volume? Vs pi by 4 d square into L. Okay. If it is given, if the value of D and L is given, Vs is equals to what? Pi by 4 d square into L. D we are having, L we are having. So I will calculate Vs as 0.0305 meter cube. Okay, now see what is given in the question. In the question, the expansion and compression, both processes are considered to be polytropic, and the value of N is given. What is the value of N? The value of N is 1.3. What's the formula for work done? N upon N minus 1, P1 V1, P2 by P1, raised to N minus 1 upon N minus 1. Okay, now I am having the value of N. P1 is there, V1 we have, Vn is equals to Vs here. Okay, see in the diagram. What is this? This total volume is nothing but Vs. So V1 is equals to Vs, that is 0.0305 meter cube, and I'll get, see here, what I am doing, I am multiplying by 100. Why I am doing multiplying by 100 is I am converting bar into what? Into kilopascals. Why I am converting that? Because I want the work done in kilojoules. If I am not multiplying this by 100, then the pressure is in bar and this what to say, meter cube. I will not get this. They both are not standards. Okay, both should be in 1 unit. So if kilonewton per, see what is pressure, unit of pressure, if I am taking kilonewton per meter square into volume is meter cube. So meter square meter cube went, what is remaining? Kilonewton meter, nothing but kilojoules. So W122 is 9.268 kilojoules. Since in the question, C is very important. If the question is, if the cylinder is double acting, I have to multiply by 2, otherwise the full answer will be wrong. So if I am multiplying this by 2, I will get 18.53 kilojoules for double acting cylinder work done. What is power? Power is work done into speed. So what is speed? 120. I want in kilowatts. So kilojoules into meter per second is nothing but kilowatts. So you will get answer. I am getting power as 37.07 kilowatts. So one is completed. Like one data I have calculated, that is power. What's the next step? The next step is to calculate the temperature rise. They have asked us to calculate the final temperature T2. Then finally we have to calculate the temperature rise. So how to calculate T2? Now see here. What is process 1 to 2? Process 1 to 2 is polytropic process. So P1 V1 raised to N is equals to P2 V2 raised to N. So what I want to calculate the value of V2. So V2 by V1 raised to N is equals to what? P1 by P2. I have the value of P1. I have the value of P2. I have calculated the value of V1. I can calculate the value of V2. So what it will be? V2 is equals to what? V1 into P1 by P2 raised to 1 upon N. N इधर जाके 1 upon N हुआ. So I will calculate V2 as 0.0005 meter cube. I got the value of V2. How to calculate the value of P2? What is the formula? C. This is general gas equation. This is nothing but your general gas equation. No? PV by T is equals to PV by T equals to constant. So P1 by T1 is equals to P2 by T2. I have P1, I have V1, I have T1. I have V2, I have P2. What I am to calculate? T2. So what will be T2? P2 V2 P1 V1 into T1. So I am having all the values. I will get what? T2. What is T1? T73 plus 15 Kelvin. So I got T2 as 114.47 degree Celsius. What is the temperature rise? Temperature rise is T2 minus T1. So initially T2, how much we have calculated T2? T2 as 114.47 degree Celsius minus 15 degree Celsius will give you 129.47 degree Celsius. This is nothing but your temperature. Okay, what is the next question here? A small single acting compressor has bore and stroke D and L, how much it is? 10 centimeters and it is driven by 350 rpm. Speed is given. The clearance volume is given. The clearance volume is 75 centimeter cube. The index of compression and expansion below to N, how much it is? 1.23. The suction pressure is 0.95 bar. Delivery pressure is 7 bar. P2 P1 दिया है. क्या बोले हैं? Calculate volume of free air at 1 bar and 20 degree Celsius dealt with 1 per minute. The temperature at the start of compression is 30 degrees Celsius.
Okay, this is there. I will tell you what is the meaning of this sentence. The next they have asked us to calculate mean effective pressure of indicator diagram, assuming constant suction and delivery pressure. What is the first step? The first step is to calculate this. Not calculate, to draw the PV diagram. See here, I have already told you in the question, if clearance volume is given, the PV diagram will be like this. So I have considered what? I have considered this VS, VC, everything. This is nothing but your clearance volume, and from here to here, with this is nothing but your swept volume. So the total VS plus VC will give what? Total volume V. This is my pressure 7 बार है और 0.95 बार प्रेशर दिया है. बाद में ये दोनों प्रोसेस कौन से है? PV रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट है, यानी का वैल्यू कितना है? 1.23 है. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? देखो क्वेश्चन में हमको डी और एल दिया है, बोले तो वी एस हम कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या है फॉर्मूला? पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल. 10 है पाई बाई 4 डी स्क्वायर. सो कितना मिला मुझे? वी एस इज इक्वल टू 785.4 centimeter cube, because I have substituted the value of D and L in centimeters. What is clearance ratio? I have told you clearance ratio C is equals to clearance volume पर displacement volume. हम जब volumetric efficiency का derivation कर रहे थे, वहाँ पे have taken C, the term C have taken. What it is? Clearance ratio. What is the clearance volume is nothing but VC upon VS. अभी देखो VC is already given in the question, 75 सेंटीमीटर क्यूब है. VS हमने कैलकुलेट किया है, 785.4 आया. तो C कितना आया? 0.0955. अभी देखो what is the formula for volumetric efficiency? I have derived it already. Once here, what is volumetric efficiency? We have derived it, right? What is that? C. This one, 1 plus C minus RP raised to 1 upon n into C. What is C? CS. C is nothing but VS upon VC upon VS. That is swept volume, clearance volume, swept volume. If substitute this, I will get the volumetric efficiency. In the problem, we have directly substituted the C, like this I have substituted. 1 plus VC upon VS minus VC upon VS into P2. RP क्या है? प्रेशर रेशियो हुआ, P2 by P1. और VC by VS क्या है? C है. हमने वहाँ पे कैसे लिखा है डेरिवेशन में? 1 plus C माइनस C इंटू RP रेस टू 1 upon n करके लिखा था. अभी यहाँ पे हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया है वैल्यूज़ को. 1 VC अपन VS कितना है हमको? 0.0955 माइनस VC by VS कितना है? 0.0955. P2 कितना है? 7 है. P1 कितना है? 0.95 रेस टू 1 upon 1.3. How much getting volumetric efficiency? 0.611, that is 61.1%. फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ. वो द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द फ्री एयर डिलीवरी. फ्री एयर डिलीवरी कैलकुलेट करने को बोले हैं वो स्टेट केस 1 में. हमको क्या पता है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज ऑलरेडी इज अगेन रिटर्न एज व्हाट? फ्री एयर डिलीवर्ड अपॉन सब्ट वॉल्यूम. अभी सब्ट वॉल्यूम क्या है? व्हाट इज FAD? V1 माइनस V4 है. अभी देखो, इफ मल्टीप्लाई इट लाइक दिस, इफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंटू VS इज इक्वल्स टू V1 माइनस V4. वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितना है हमारा? 61.1 है, परसेंटेज है, 0.611 हुआ. VS कितना है? 785.4. आई एम गेटिंग V1 माइनस V4 एज 479.88 सेंटीमीटर क्यूब पर रेवोल्यूशन है. ये हमको क्या व्हाट आई वांट इन 1 रेवोल्यूशन. सो व्हाट आई शुड डू? आई शुड मल्टीप्लाई बाय व्हाट? स्पीड. इट इज गिवन द क्वेश्चन नो 350. अभी देखो ये सेंटीमीटर क्यूब है. आई वांट इन मीटर क्यूब मीन्स व्हाट? आई शुड डिवाइड बाय व्हाट? आई शुड डिवाइड बाय 100 क्यूब. ओके, 100 क्यूब 10⁶ हुआ. तो 479.350 अपॉन 10⁶ कितना आया? V1 माइनस V4 इक्वल्स टू 0.1679 मीटर क्यूब पर मिनट. और आई वाज टेकिंग दिस रेवोल्यूशन RPM में था, हमने कन्वर्ट किया किसको? मीटर क्यूब पर मिनट में किया. दैट इज नथिंग बट हियर V1 माइनस V4. अभी देखो व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट. और नेक्स्ट फ्री एयर, wait 1 second. If I calculate the free air delivered derivation I have done. See, okay, see here, free air delivered. If P1, V1, P1, T1 indicate atmospheric conditions, then free air delivery is equal to what? FAD into P1, V1 minus V4 upon T1 into TF upon PF. ये फॉर्मूला है, डिराइव किया था. अभी यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे. देखो, P1 upon T1 into V1 minus V4 into TF upon PF. अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में. जब गिवन द क्वेश्चन राइट, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोले? देखो 1 बार 20 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हुआ हमारा? PF और TF हुआ. अभी यहाँ पे क्या बेस्ड ऑफ कॉम्प्रेशन 30 डिग्री सेल्सियस. ये क्या है? ये P1 और T1 हुआ है. 30 डिग्री सेल्सियस बट T1. अभी देखो यहाँ पे P1 कितना है? 1. P1 इज ऑलरेडी गिवन, हमको पता है 0.95 है. V1 माइनस V4 हमने कैलकुलेट किया था 0.1679. T1 कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 डिग्री सेल्सियस बट 303 केल्विन्स है. TF कितना हुआ? 293. 20 डिग्री सेल्सियस दिया है क्वेश्चन में. 1 बार PF हुआ.
तो कितना है आपका, वी हैव फ्री एयर डिवेलप्ड 0.154 मीटर क्यूब पर मिनट। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर बोले हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन इफेक्टिव प्रेशर, PM इज इक्वल्स टू वर्क डन पर साइकिल अपॉन स्टेप वॉल्यूम, VS। अभी देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, N अपॉन N-1 P1 इंटू, अभी यहाँ पे हम क्या करें, टोटल वर्क कंसिडर करें, नेट वर्क ऑफ द साइकिल बोले तो एक्सपांशन और कंप्रेशन दोनों कंसिडर कर रहे हैं। तो अभी देखो P1 कॉमन होता है, वी नो दैट P1 इज कॉमन, P1 इज इक्वल टू P4 हुआ तो P1 आया, V1 माइनस V4, ये कॉमन टर्म्स बाहर निकाले, बचा क्या ब्रैकेट में, P2 और P1 बचा N अपॉन N-1 N-1 अपॉन N माइनस 1 अपॉन दिस सब वॉल्यूम। सभी सब्स्टिट्यूट करने का टर्म्स, हमारा N कितना है 1.23 है, P1 कितना है 0.95, V1 माइनस V4 हमने कैलकुलेट किया था, P2 P1 दिया है, एवरीथिंग इज देयर, VS कितना है 785.4 हमने कैलकुलेट किया था। सो आई विल गेट मीन इफेक्टिव प्रेशर एज 1.425 बार।